इन चैंट्स के बाद सेशन को मैं सर के लिए आगे बढ़ाता हूँ, वो आगे मार्गदर्शन करेंगे। हमने विचार रखा था कि आज हम ब्रेकआउट ग्रुप बना के जो संज्ञा के 3 आयाम हैं उन पे चर्चा कर लें इंटेंसिव छोटे छोटे ग्रुप्स में। तो आप मुझे वो बना दीजिए पोस्ट, तो मैं बांट देता हूँ। दरअसल मे आई रिक्वेस्ट, आप एक बार अगर समराइज कर देना वो छोटे छोटे क्या हैं और उसमें हम क्या क्राइटेरिया यूज करें, इट माइट बी हेल्पफुल। जी, लास्ट जब हमने डिस्कशन किया था संज्ञा के ऊपर, तो वी हैड रियलाइज्ड कि जो संज्ञा के फॉर्म्स हैं 6 फॉर्म्स, उनसे हम सब अच्छी तरह परिचित हो गए हैं क्योंकि काफी चर्चा हुई थी पहले, और उनके असस से उत्पन्न होती है और उसके निरोध से समाप्त होती है, तो बातें क्लियर थी। फिर हमने चर्चा की थी संज्ञा के आस्वादन, आदिनाम और निस्सरण की। पिछली बार काफी चर्चा की थी इसके ऊपर कि संज्ञा के प्रति जो सुख और आनंद उत्पन्न होता है संज्ञा के आधार पे, हमारी परसेप्शन के आधार पे, और उसमें हम मजा लेते हैं, उसमें आनंद लेते हैं, तो एक तरह से राग बनता है उसके प्रति, उसे कहा संज्ञा का आस्वादन। और क्योंकि वो संज्ञा अनित्य है, दुख है, विपरिणाम धम्म है, तो अंततः कभी ना कभी देर सवेर उसके अंदर निहित जो अनित्यता है वो प्रकट होती है और उसके प्रति आसक्ति के कारण दुख होता है, क्योंकि वो हमारे वश में नहीं है। और ये इसी को कहा कि संज्ञा में खतरा है, और इस खतरे को अगर हम नहीं देख पाते तो संज्ञा के आस्वादन में लगे रहते हैं कंटिन्यूअसली। यही ठीक है ऐसा मान के उसी हिसाब से जीवन जीते हैं। संज्ञा का हमारे जीवन पर, जैसे चर्चा हो चुकी है, काफी गहरा असर पड़ता है, क्योंकि संज्ञा के ही जो फल है वो है हमारा व्यवहार। जैसे एक और सूत्र में आया था, संज्ञा का विपाक क्या है, हमारा व्यवहार उसका विपाक है। इसलिए संज्ञा को, आस्वादन को और उसके भय को जानना आवश्यक है। और फिर जब भय को जानेंगे तो स्वतः ही मोटिवेशन होता है कि हम इस अटैचमेंट को छोड़ सकें। तो छंद राग विनय, छंद राग बहानम। तो शुरू तो यही करेंगे कि भाई उसको, उस राग से वो जो उत्पन्न हो रही है टेंडेंसी, उसको रेस्ट्रिक्ट करें, और फिर अष्टांगिक मार्ग को पुष्ट करके उसका प्रहान करें, ताकि संज्ञा का जो ग्रिप है हमारे ऊपर, तो उससे हम रिलीज हो जाए। और इसी को भगवान ने कहा कि यही जो है संपूर्णता है धर्म में, कि हम उसको पूरी तरह से देखेंगे, देन विल बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो हम अपने अपने अनुभव के आधार पे, जहाँ जहाँ पे हमें मालूम पड़े ये स्पेसिफिक डोमेन में, 6 जो डोमेन है, रूप के प्रति, शब्द के प्रति, गंध के प्रति, रस के प्रति, टच के प्रति, या मानसिक विचारों के प्रति, जो हमारे परसेप्शंस हैं, उसको हम रिफ्लेक्ट करके देखें कि कौन से परसेप्शन ऐसे हैं जिनके प्रति हमारा काफी स्ट्रॉन्ग आस्वादन है, जिसमें हम बहुत रस लेते हैं और उसके प्रति अटैचमेंट हो गई है, और उसके खतरे को नहीं देख पाने के कारण हम कैसे, हमारा जीवन उससे प्रभावित हो रहा है। सो वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन दैट। और अगर हम उसके आस्वादन के साथ साथ उसका खतरा भी देख पाए तो उसका हमारे जीवन में क्या इम्पैक्ट होगा, वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन दैट एंड देन see the need for getting released from that Saññā, grip of the Saññā. This is in brief what we can discuss. Okay. And is that okay, Bante? Okay. फोकस किया कि एक तो उनको जिह्वा पर संज्ञा ऐसा कुछ है कि
कुछ अच्छा खाना है तो खाते जाते हैं और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो उसमें एक तो ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आई कि वो बेसिकली वेदना खंड की बात कर रही थी। और उसमें जो समझ वाली बात थी, वो फिर आपने लेटर ऑन जॉइन किया तो थोड़ा-सा आपने इस चीज़ को समझाया कि कई बार हमारी ये भी समझ होती है कि प्लेट में खाना छोड़ना नहीं है, पूरा खा लेना है। कई बार इस चक्कर में भी लोग ज़्यादा खा जाते हैं। तो वहाँ पर हमारे को अपनी समझ को ठीक करना होगा और अगर आदिनव को देखने के बावजूद नहीं चीज़ें पकड़ में आ रही हैं, इंद्रिय संवर नहीं हो रहा है, तो समाधि के अभ्यास को करना पड़ेगा। साथ में दूसरी बात उन्होंने बोली कि उनका एक मनोधर्म है कि अगर कोई व्यक्ति उनका उनका एक अपना एक समझ है कि लोगों के प्रति बहुत लाइक और डिसलाइक उनकी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो ये उसके पीछे समझ है कि अगर कोई एंटी नेशनल बात करता है तो उनको डिसलाइक होती है और अगर वो पैट्रियोटिक है तो वो लाइक करती हैं। इवन दो वो पर्सन बाकी चीज़ों में गलत हो, तब भी उनको फ़र्क उतना नहीं पड़ता क्योंकि वो पैट्रियोटिक है। और अगर कोई बंदा बाकी चीज़ों में बहुत अच्छा है लेकिन उस बाय चांस उसने कुछ ऐसा बोला जो इनको लगा कि एंटी पैट्रियोटिक है तो वो उनको अगली भी लगने लगता है। इवन शी सेज लाइक ऐश्वर्या राय। इफ ऐश्वर्या राय बाई चांस भूल से कुछ ऐसा बोल दे जो उनको लगता है कि एंटी पैट्रियोटिक है तो वो कहते हैं कि मुझे अगली लगेगी। सो यहाँ पर भी आप मौजूद थे रूम पे, तो डिस्कशन पे फिर यही हुआ था कि अम, इसको जानना है कि इसमें समझ क्या है। समझ ये है कि जो पैट्रियोटिक है वो गुड है, और जो एंटी नेशनल है वो बैड है। तो इसमें आदिनव कहाँ छुपा हुआ है कि पहली बात तो हम किसी आदमी को अंदर से तो जानते नहीं। और आदमी की समझ बदलती है। आज जो पैट्रियोटिक है, बाद में अगर वो इंटरनेशनल हो गया और आप उसे गुड मानते रहेंगे तो आपको ही दुःख होगा। प्लस आप द्वेष बढ़ा रहे हैं। अपने आप को बिना जाने, जेन्युइनली जाने केवल एक एक पर्टिकुलर यार्डस्टिक पर किसी को जज करके आप अपने दुश्मनी बढ़ा रहे हैं और अपने आप के अंदर द्वेष बढ़ा रहे हैं तो अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। तो उससे फिर निस्सरण करना होगा और ये जब डेंजर देख लेंगे तो फिर हम उस निस्सरण की तरफ जाएँगे व्हिच शी सेज कि यस शी विल वर्क अपॉन इट। देन देन पूनम जी ने अपना वाकया बताया कि उनकी एक समझ थी कि पढ़ाई जो भी इनको कोई कोर्स करना है, वो तो खाली आराम से बैठ के ही होता है, शांत चित्त होके ही होता है, जॉब के करते-करते नहीं होता है। तो उस प्रोसेस में वो काफ़ी नुकसान हो रहा था उनका और समझ यही थी कि शांत चित्त होके एक समय में एक ही काम किया जाता है। तो फिर उसमें आदिनव उनको दिखा कि ऐसे तो उनके सपने पूरे ही नहीं होंगे। बहुत सारी चीज़ें करने का मन है लेकिन जॉब भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो फिर उन्होंने इसको निस्सरण के तरफ गए। उन्होंने अपने अपने आप को समझाया, अपने समय को बाँटा और उनका कहना है कि जैसे वो अ, क और वो इंटरमिंगल कर लेती हैं जॉब्स। मतलब जैसे कि कोई चीज़ अपने जॉब के रिगार्डिंग पढ़ रही हैं, फिर कुछ कोर्स कंटेंट पढ़ना है, तो अगर यहाँ से बोर हुई तो उसको पढ़ लिया या वहाँ से थोड़ा समय मिला तो वापस इधर आ गई। तो ऐसे करके वो उस समझ से बाहर निकल के आई हैं कि एक समय में एक ही काम करना है। सो ये 2 प्रोमिनेंट थे। बाकी काम्बले जी सेइंग गुड। उनका बस एक ही लास्ट काफ़ी कम समय बचा था, तो उनका यही था कि बोले कि एक ही मेरा दुःख है कि मैं सुबह-शाम सेशन अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ और पता नहीं वो मेरी समझ कौन-सी है और मैं उससे कैसे निस्सरण पाऊँ। लेकिन वो एक्टिव हैं, वो सोशल सर्विस में एक्टिव उनका कहना है और हेल्थ का ख़्याल रख रहे हैं, तो ही इज़ ओके विथ दैट। इतना ही हुआ सर। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कामले जी के केस में परसेप्शन क्या है वो नहीं आइडेंटिफाई हो पाया। नहीं सर, एक्चुअली समय कम बचा था। एक्चुअली काम्बले जी वाज़ इन फैक्ट आंसरिंग पायल जी केस कि उनका कहना है कि वो टंग पे कंट्रोल कर लेते हैं। एंड ही वाज़ सेइंग कि तो मतलब उन्होंने अपना अंतर्मुखी हो गए हैं और इसकी वजह से वो काफ़ी कंट्रोल कर पाए हैं। 2005 ऑनवर्ड्स उनका कहना है। आई थिंक ही केम इन कॉन्टैक्ट विद यू आल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उनका कहना है कि अब मैं अंतर्मुखी हो गया हूँ, मेरा को पता है कि कितना खाना है, कितना भी अच्छा रहा हो। तो सिंस 2005 एंड ही वाज़ रिटायर्ड इन 2015 उनका कहना है कि ना तो मैं बीमार पड़ा हूँ, ना मेरा पेट खराब होता है। तो ही वाज़ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अस। तो वो उस आंसर में चले गए। फिर हमारा समय खत्म हो गया। Okay. Then रूम नंबर 2 में ये हैड राजेंद्र जी। या हमारे ग्रुप में सुरेंद्र जी हैं,
तो उनसे शुरू किया था। तो उन्होंने जब अपने चाय के ऊपर काफ़ी उनकी एक किस्म से उनका मन वहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता था, तो इसको आपने फिर करेक्ट किया कि वो एक हैबिट है, उसको परसेप्शन के उसमें नहीं लिया जा सकता। तो फिर उसके बाद पल्लवी जी ने बात की, और पल्लवी जी को ये परसेप्शन बन गया था कि इंडिया में यदि रिसर्च करना है तो कई सारे फैक्टर्स हैं जो उसको, जहाँ पर वो कंफर्टेबल नहीं थी, और इस वजह से उन्होंने कहा कि बाहर रिसर्च करेंगी। और बाहर का भी देखने के बाद उनको लगा वहाँ भी कुछ फैक्टर्स हैं जो कंफर्टेबल नहीं है इनके लिए। तो एक परसेप्शन पहले तो बना हुआ था कि इंडिया में रिसर्च लेडीज के लिए सारे फैक्टर्स इतने अच्छे नहीं हैं, और उसके बाद जब बाहर का मौका लगा तो वहाँ भी ऐसा ही फील हुआ। तो अल्टीमेटली यही हुआ कि इट इज नॉट दिस परसेप्शन इज फॉल्टी, कि research cannot be done if such or such uncomfortable situation is there. So then that was the understanding she developed after we were discussing about these things. And Mr. J.K. Sharma, he had a perception that he is always right. And that continued. जो एक मन में उनके विचार है कि मैं I'm always right, and it used to continue for a pretty long time. And if somebody would say something which did not fall in that particular domain, और उनको फिर वो बुरा लगता था, and he would feel very discomfortable about these things. पर धीरे धीरे फिर ये इस तरह से जब हम लोग अब इकट्ठे बैठते हैं और उन्होंने दोबारा विचार किया, तो अब वो उनका जो परसेप्शन है वो इसमें वो धीरे धीरे अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो फिर उन्होंने एक बात कही कि क्या perception becomes a belief if it is repeated, if things are repeated every day. And he said it gets diminished if it is done once in a week. It diminishes further if it is done once in a month, or if it is just done once in a year. तो perception अपने आप उस चीज का खत्म हो जाता है. And then again he said that he has a perception that honesty is the best policy, and but in the life we do come across people who are not honest. तो इससे, but he is not now carrying it in his mind कि पहले बहुत दुख होता था लेकिन अब इस तरह की कोई बात होती नहीं है, because he understands that it is for him and he is following it. And as far as I'm concerned, I did talk about a perception which I developed in my young age. अब इसमें एक सवाल उठता है कि was it my belief or it became a perception? So I think it was a belief and then gradually it became a perception कि इंसान को बहुत फेमस होना चाहिए. ये बहुत बचपन से एक मन में था कि फेमस होना चाहिए, और वो काफी इस पे ही काम होता रहा, और it was always at a cost of many more things. तो फेमस हो भी गए, सब कुछ मिल गया, बहुत कुछ मिला, लेकिन अल्टीमेटली आज जाके ये रियलाइज हो रहा है कि वो परसेप्शन जो था वो एक गलत परसेप्शन बन गया था, और उसकी क्योंकि आज उसकी अनित्यता का, उसकी अनात्म का और इसके दुख का आज उसको समझ में आ रहा है. ये क्योंकि उसमें कोई दम नहीं था, तब लगता था बहुत दम है, और आज वो बिल्कुल खोखला लगता है. Group Geeta, kindly share. हम लोग के ग्रुप में डिस्कशन हुआ, एंड देन यू आल्सो इंटरवीन एंड क्लैरिफाइड अ लॉट ऑफ थिंग्स. संगीता जी, अदिति, नवरू, अपूर्व एंड माई सेल्फ वर देयर. तो संगीता जी का एक एग्जांपल था फूड को लेके, like almonds are very good for health and it should be consumed every day, and I'm a very good mother and I take care of my kids and I follow this.
and basically उनको एक attachment हो गया था that I'm very good and I you know and I prepare this I take care of my kids. उन्होंने अपने प्रति और अपने बच्चों के ऊपर तो थोपा था और अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस के ऊपर भी वही थोप दिया था कि you should eat every day and like you know you should follow this strict discipline as such. Then उन्हें बाद में पता चला कि like you know getting attached to it and you know getting into this kind of a disciplined routine was giving her a lot of suffering. And now that she does not impose her perfection or rules on her family members, ये एक example उन्होंने दिया था. Second example उन्होंने दिया था उनको मतलब जब कोई बोल रहा है तो she used to you know correct people and ये ऐसा ही होना चाहिए as a part of advice also. दोनों ही साइड के फैमिली मेंबर से तो कहीं ना कहीं उनको वो एक अटैचमेंट भी हो गया था that like you know she is like I'm very good in giving advice और मैं जो बोल रही हूँ सब लोग सुन रहे हैं and all that. And then घर में भी बहुत लोग उन्हें टोकते थे उनके फैमिली मेंबर्स तो उन्होंने उसमें एक डेंजर भी देखा है. आई एम नॉट एबल टू कंक्लूड वेदर शी इज एबल टू ड्रॉप इट कंप्लीटली इन दिस केस. And Aditi ने एक example दिया था right from her childhood she had an attachment to read magazine or newspaper. तो मतलब it was so much that she like you know while she is having all 3 meals she used to get attached to it. She used to get carried away in that story and it was for a very long time. For that she used to fight with her cousins also just to grab that magazine or newspaper. And then later when she got into Vipassana or Abhidhamma unke dadu ji ne unhe kaha ki it's a waste of time. And she also realized that because she's not been eating mindfully during this time like you know while she's reading the newspaper and she has seen the danger and now it's been like 17 years. She has completely dropped it and now she's not attached to it or because she has realized the danger. And third is नबरुन के example के टाइम पर आपने intervene किया था. पहले उन्होंने general discussions हुआ था. Then he also spoke about taking gratification and watching Bollywood movies, seeking delight. This is how you use the word. And he was getting absorbed in it. कि मजा आता था and I'm not sure whether he was able to see the danger in it exactly. And दूसरा भी उन्होंने एक example दिया था like you know forming a judgment about people the way they dress up कि ये ऐसा क्यों dress कर रहे हैं ऐसा ही dress करना चाहिए. And then you intervened and like you helped him to work on this. Fourth मैं अपना एक खुद का example दूंगी. like ज़्यादा time नहीं मिला मैं अपने examples के लिए कि पुराना examples दिया था मैंने. Seeking perfection, this I can say like you know I had this perfection while I was working कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए with my team members कि ये ऐसा ही करना चाहिए और इसी टाइम पे कर देना चाहिए. नहीं तो I used to get very मैं इससे बहुत attached थी. And this also created a lot of conflicts like you know ये अभी ये जो काम दिया है तो इसी समय में हो जाना चाहिए. So that was an expectation and that used to make me feel very disappointed at a lot of times. And now I've seen the danger because 5 fingers are not equal. This is how I realized it and I cannot expect everybody to work the way I work or the vice versa. So मैंने इसको completely drop कर दिया because now when I'm working and if that kind of things are not happening the way I want to, it's not that I will not try and correct it, but it is not affecting my mind. This I can say with a lot of confidence. So I've dropped it completely on that bit. तो एक ये example मैंने दिया. Example discuss तो नहीं हुआ. I'm just giving it. And one more example what I gave was about praise. Like you know a lot of gratification in seeking praise and like when people used to praise me and everything. And वो एक अलग से एक expectation भी which built up in a very subtle way. Then I realized that people's expectation also changed, the views also changed, my views also changed. That was also another very prominent one after the perfection, seeking perfection. अभी वो पूरी तरह से निकल चुका है because I've seen the danger in it and I have dropped it also. So these are the 2 things which I have dropped it completely. Rest बहुत कुछ ऐसा है जो still holding on to it. So that's a short. Television, you have some question or a comment? I have a question. So since Geeta ji, she mentioned that
she had this because she's a perfectionist and she wanted the team members also to work the way she wanted them to work, and they didn't. And earlier it would cause her pain, but now it doesn't. So my question relates to that. So for example, I also have a certain way of working, but I don't expect others to follow it. So that's very clear to me. And if they don't follow, it doesn't bother me at all. But if somebody has agreed that, yes, this is what I will do, and I will do so on this date, and they don't do it, again, I have learned not to bother, even though the person agreed. But so despite the fact that I have learned not to bother about these things and not to let them affect me mentally or emotionally, sometimes it happens that they do affect me. So for example, last month it happened. People had agreed that they would do this on this date, and they did not do it. And normally I would just be, yeah, whatever, it's their life. I've done my bit. But that day it really bothered me. And it took me hours and maybe a day to get over it. So I'm wondering what happened and why was it so? I understand that probably my work on myself is not good enough. Otherwise, this would not have happened. So what can I do to improve myself? I'm asking this question because it's specifically related to what you just mentioned, Geeta ji. So. Yes, Geeta, can you like to answer? Yeah, I'll answer it because I have gone through this couple of times and I've created a lot of suffering for myself. Having said that, when you work in an organization, there is a responsibility also where you have to deliver and you have to work with 10 different people, and exactly you will be dividing the work and you place a responsibility on a certain person, assuming that this person will do it. And if he is not doing it, it will backfire on you as such, which has happened a lot of times, and that also created a lot of conflict and lots and lots of problem for me, at least, and I was not able to explain it or put it across. Then I used to get bullied by people as such. तो मैं अभी क्या करती हूँ, the way what I do now is if they are not able to do it, I do it myself. Okay, I do it myself, but without getting without getting upset. I don't get into an argument or I don't get into a discussion because I feel that it's a waste of time for me. Neither I get into tell them you have to ये बोला है तो यही करना चाहिए, अभी क्यों नहीं किया. Try to find a balanced way of seeing how I can contribute and finish it on time, and then later office hai to I cannot be doing it every time on my own, everything. Later I go and explain to them, and I give a time limit also कि आप इसी समय पे आप कर लो, नहीं होता है तो you let me know. So this has really helped me. And in a profession where I am कि last minute पे बहुत सारे changes हो जाते हैं, शुरू हो रहा है event, उसके पहले कुछ काम नहीं हुआ है तो मैं कितना जल्दी कैसे कर सकती हूँ. होता है तो I take it, I don't attach to my views strongly कि because this responsibility is given to me and I have to show it that I'm perfect, and I'm talking about, forget about others कि मुझे ये करके ही देना चाहिए अभी, I'll try my best. But now I take this criticism जो भी है, I start learning कि मैं next time मैं कैसे better करूँ, because every time it's a learning experience. अभी मैं ये जो बोल रही हूँ ये सही for me, it may not be true for you in your circumstances with the kind of work what you are doing. So that is what, or with the kind of work what I am doing, वहीं पे दिख जाता है गलती. I cannot avoid it. कि अगर मैंने कुछ बराबर branding नहीं किया तो वो वहीं पे दिखेगा. At that same point of time, that will show. If you are in a stage and if you don't sing properly, you will come to know exactly. Audience may not know it, but in my case, the audience will know it exactly where I have gone wrong. So it's a very subtle, it's a very sensitive work. So वहाँ पर I have taken things, I have learned a lot also, because I used to get attached and suffer, and I used to go and get into an argument, and not argument, conflicts बहुत हो जाता था. अभी मुझे वो इतना नहीं है. तो another thing I'll tell you, when I am not in this conflict, ना काम थोड़ा smoothly जा रहा है. So things are helping you. That's another learning for me. So जब बहुत attached होते हैं तो you are not able to explain to the other person. Get attached to it, and when you see it from the other's point of view, then you are able to help that person also. At least this is my experience. I'm still working on it, but largely this thing I have dropped it. It's not affecting me, at least. I don't know about how it is working for others. मेरे लिए तो वो affect नहीं कर रहा है अभी. Okay, thanks a lot, Geeta ji. It seems that used to affect you a lot, even while it you used to affect a lot, and I was very sensitive also.
Yeah, because fortunately for me, it wasn't. So I said, like, since the beginning, I just have this thing, oh, I do my work. Because I have people who commit in writing and they don't do it. So I just said, well, you don't do it. So I adopt the same strategy. Either I do it, but then there are situations, as you said, where this will not work. Because, for example, I'm in the teaching profession, students don't do the assignments. I can't do it in their place. But then I have the written commitments, right? So yes, I found a way out. But my question was that, so all these ways out, I have my own ways out, and thankfully they've been working in my favor. But my concern was that why did that day I feel so bad? Why did it affect me emotionally that much that day? Because till now it wasn't. I had mastered, let's say, mastered. I mean, relatively, obviously, within double quotes, the art of not getting disturbed by other people's conduct. But that day it did bother me, and so now the fact that it bothered me, it's bothering me. That why did I get bothered? That means that my sadhana is not good enough. Right? So Yeah, that's good. Yeah. So the conclusion is that we should investigate more. Okay, let's conclude that we need to really reflect what exactly was the reason. It could be that the impact of the event was very strong, and I was not very mindful at that time. Attachment to the success of the event was very strong. So many reasons can be there. So one can investigate and find out. Since you have been able to manage so many other smaller events, smaller kind of difficulties on the way, this also you can investigate. One thing is of course clear, that rather than bothering about bothering, that is certainly is not a very wise thing to do. One can use the bothering to investigation. Whenever there is suffering, it should be understood. So it should suffer. Yeah, there was a suffering, and now you should try to investigate and find out what exactly happened, where exactly is the weakness, and I'm sure you can find it out by proper calming down the mind and then looking at the event in a retrospective manner, as I think we had discussed it in the past. You can retrospectively bring to the memory and then have a look at it and see where exactly the problem arose. Okay. Sir, I will add another thing. What I realized in all this, it's like I'm not always perfect. I have made so many mistakes, and how I used to feel when others used to, like, because conflict ki baat kar rahi hu, so that I have really realized it. So mujhe abhi, yeah, I've made a lot of mistakes. So I feel very bad also कि ऐसा नहीं व्यवहार करना चाहिए, because it really comes on your behavior when you have this kind of a strong perception. So that is another thing I just wanted to, point it out. So Good, very good. Thank you. Thank you very much. I hope the discussions were enriching for all the participants. One comment I would like to just say before we conclude, it's already nearing 8:30, that one should always, I had said it in some groups also, when we are recalling some such event about which I am strongly attached, rather than focusing on the details of the attachment and things of that kind, we should try to first write down what is the perception behind that. And I would say put it down in words. This is the perception which is resulting in this kind of a behavior and this kind of a judgment, because perception is associated with evaluation, with judgment. So this is my perception, and that perception is causing this kind of judgment, and attachment to that judgment is causing suffering, and this judgment has been stood the test of time, and it has been found to be sometimes true, many times not true, and therefore suffering arises in various forms. So once we see that this is my perception, this is how it gives rise to joy, and this is how it gives rise to suffering, then the things become clear. If we don't spell out perception and let it remain nebulous in the mind, then the possibility of cutting through it is very little, because we always can justify whatever I'm doing, right or wrong. It's very important that we clearly specify, this is my perception. For example, people should talk softly to me. This is my perception. And I think those who don't talk softly are my enemies, or they're trying to harm me, or they're trying to humiliate me. Or the people who criticize me are actually malicious. Or this kind of food is disastrous. It should never be taken. Or whichever way it can be, or
This person is certainly very obnoxious. This politician is certainly very bad. And then I keep that perception with me and keep on evaluating. And then everything I see about that person, whosoever that person is, I look at it from that perception and evaluate it wrongly and get into all kinds of conflicts about it. It can be about sound, it can be about words, it can be about smell, about taste, it can be about touch, and it can be about my mental thinking processes, various kinds of belief systems which I have. Communism is good, and those who are not communists are stupid people. They're selfish people, or the other way around. Communists are really suckers. They don't do anything. They just keep on president as kind of advising others and do nothing. Then have any perceptions. Nationalists are good or no. Nationalists are bigots, or religious people are good, or Vipassana is the best way of meditation, or Buddha's teachings are the best, everything else is stupid. These are perceptions which can influence our life very strongly. So what we had suggested at the beginning is that we should look at those perceptions, especially those which influence our life in a very powerful manner, not a one-time incident of that kind. There are some perceptions which influence our life so much because we're not able to see them as perception. We think ये तो सच है ही, ऐसा तो होना ही चाहिए. जब हमको ये लगने लगे कि ऐसा तो होना ही चाहिए, that is the place where we should really reflect deeply and see, oh, this also is a perception कि लोगों को patriotic तो होना ही चाहिए, या लोगों को vegetarian तो होना ही चाहिए. Of course, animals को मारना बहुत गलत बात है. ये लोगों को vegan होना चाहिए. Animals को दूध animals के लिए, हम तो उनके साथ अन्याय कर रहे हैं. And so many perceptions are there, so which has very strong impact on our lives. And they impact our behavior, relationship with others if we hold them very strongly. So I would request that we reflect on those issues deeply in our own time, where the impact on our life is very profound. And quite often we are not able to even locate them because we think that this is the right way to do. This is absolutely right. Isn't it? There should be justice in the society. Isme kya burai hai? Of course, there should be, but it is not. And therefore, there are consequences of that belief in that system. And attachment to anything, as we have been practicing, any of the khandas is a cause of suffering, is a cause of rebirth, as we discussed yesterday. If the consciousness attaches to anything in this sensory domain, or even in the Devic realm, in the immaterial domain, if consciousness attaches to anything as good or as bad or as something which is worth pursuing, we'll be in the cycle of birth and death. We can't get out of that. So keeping that broad objective in mind, we can analyze our perceptions more deeply. खासतौर पर उनको जो कि हम देख ही नहीं पाते कि perception, तो उसके लिए वही तरीका है कि किसी व्यक्ति के प्रति है, किसी शब्द के प्रति है, इस तरह की आवाज के प्रति है, इस तरह के ड्रेस के प्रति है, इस तरह के विचारों के प्रति है, इस तरह के स्मेल्स के प्रति है, इस तरह के भोजन के प्रति है, इस तरह के टच के प्रति है. सिर पे हाथ रखना तो बहुत ही, सिर पे किसी को छूना तो बहुत ही गलत है. कोई कहेगा नहीं, हमारे यहाँ तो सिर पे छू के आशीर्वाद देते हैं. So there's so many perceptions which we have and which become a part of our tradition, and constantly we uphold them as absolutely true. So those are the things which we should really act on, so that we can then see the danger in them. That's the whole idea of the exercise. Okay? So thank you all. I think it's already past 8:30. So over to you, Nikhil.